Good morning, friends and colleagues. Yeah. I think I now need to be very careful of what I say in the media sometimes. Mr. Xavier Rajan was very, very kind, a lot of kind words. I wish my mother-in-law also was here in the audience. She normally thinks that I am always trying to escape the domestic duties and running away on a Sunday. She would have seen how much people are actually praising me. Thank you so much for those kind words of introduction. Some of the CSR parties, because as part of Deloitte, I am the CSR leader, and maybe somewhere I may have given some quotes and statements. Of course, I mean them, but I never realized that they are available on the internet somewhere. First of all, good morning and thank you. Very good to see you in such large numbers here. It gives hope to the speaker, because the speaker is always worried about whether there will be people who are there to listen to him or not. I have children who are about 18 years of age. They don't want to listen to me. They are more happy listening to and reading WhatsApp and Instagram. और इसीलिए मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं है, पर आप जैसे लोगों को चुनना पड़ता है. Shri Lalit Bajaj, the regional council member on the dais, Shri Nitesh Kothari, जिन्होंने जैन धर्म के ऊंचे आदर्शों के हिसाब से संन्यास लेने का फैसला किया है और पाकिस्तान जाके सेटल होने वाले हैं. That was in lighter vein, Nitesh. Don't take it seriously. एक्चुअली लाइफ में एक चीज़ हमेशा किसी ने कहा है और मुझे वो बहुत पटता है कि कभी अपने आप को ज़्यादा सीरियस मत लो. आपको लगता है दूसरे लोग आपके बारे में सोच रहे, कोई अपने बात आपके बारे में सोचता नहीं है. सब अपने खुद के बारे में ही सोचते हैं लाइफ में. इसलिए नेवर टेक योर सेल्फ टू सीरियसली and don't think that the other person is thinking about you. That is a motto. If you remember in life, you will be happy, I think. Shri Sumit Doshi ji, who again is a very young member, vice chairman, to be chairman, and I think that's a very good sign. Shri Sandeep Jain, convener of the study circle, and Shri Vimal Agarwal, who is a dear friend and has always been very persistent, asking me to come here, has also asked me to be bilingual. And मैं हमेशा जब मैं स्कूल में था तब मैं सोचता था कि मेरी हिंदी अच्छी है और मैंने एक्स्ट्रा हिंदी भी लिया था उस टाइम पे स्कूल में. अब आज पता चलेगा कि हिंदी पे क्या कमांड है या नहीं है करके, तो आज वो टेस्ट किया जाएगा. अदर डिग्नेटरीज ऑन द डायस, ऑफ द डायस, आई थिंक वसई ब्रांच जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है. कल मैं बहुत खुश था, जैसे आप बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि मैं बजट सब साइड में रख दिया. उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे. मैं अपना अंडर 19 का वर्ल्ड कप फाइनल देख रहा था. क्योंकि मुझे क्रिकेट में बहुत शौक है. दो चीज़ों में बहुत शौक है, क्रिकेट और मूवीज़ में. और क्रिकेट देख रहा था और ऑफ कोर्स मैच में जैसे आपने देखा कि इंडिया की टीम ने हर एक को 100 रन 200 रन 8 विकेट से हराया और बहुत अच्छा लगा फील्डिंग देख के, बैटिंग देख के. और सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. राहुल द्रविड़ हमेशा कभी अपने आप पे स्पॉटलाइट नहीं करते थे, पीछे चले गए. और उनको जब पूछा गया कि आपका कितना श्रेय है और आप क्यों श्रेय नहीं ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखो ये सारा मेरा क्रेडिट नहीं है. एक तो प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और दूसरा उसने कहा कि प्रोसेस और फॉर्मेट बहुत अच्छा हो गया है कि अच्छे अच्छे प्लेयर उभर के आ रहे हैं. उन प्लेयर को ऑफकोर्स मैं ट्रेन कर रहा हूँ, बट सारा क्रेडिट प्रोसेस और फॉर्मेट को जाता है. उसी तरह वसई ब्रांच और आपके स्टडी सर्कल इतना अच्छा काम कर रहे हैं आजकल ऑल ओवर द रीजन. इसीलिए फिर रीजन को क्रेडिट मिलता है, इसीलिए फिर ICAI को क्रेडिट मिलता है. रियल क्रेडिट तो ये लोग को जाना चाहिए जो एक्चुअली मेहनत करते हैं हर सैटरडे हर संडे, और इसके वजह से ही आप सबको ये फ़ायदा हो रहा है. आई रियली मीन इट. आई सैल्यूट ऑल दोज पीपल. मुझे अगर संडे जब तक मैं इंस्टीट्यूट में नहीं आया था, मैं कभी कोई लेक्चर मीटिंग में जाता ही नहीं था, क्योंकि अपने फैमिली के साथ हम हमेशा कोई टाइम स्पेंड करना चाहता है. अभी इंस्टीट्यूट में आ गया हूँ, अभी समझा है कि टाइम कितना देना पड़ता है, तो इसीलिए आई रियली गिव देम द
complete credit for whatever they have done. Okay, now let's move on from, and also Captain Vinod Sharma ji, thank you for being here. He is the president of the Industries Federation of the area, and all the past chairmen who I have been associated with when I was a WRC member, including Shweta ji, Pramod ji, Ramanan ji, and all others. I think it's very good to have you, as I said, and I hope that I will be able to give you, it is not both Nitesh and Xavier ji have made a request. My job is not to give you comments on the budget. There are two types of people I know who have become very happy with the budget. There are two types of people who are happy. एक तो senior citizen class, क्योंकि उनके लिए कुछ जरूर हुआ है. And then there is a second class like people like me. And why? Why do I say so? क्योंकि मैं ये WhatsApp पढ़ते रहता हूँ और एक सदगुरु जग्गी वासुदेव के नाम पे एक फॉरवर्ड चलते रहता है आजकल, जिसमें कहा है कि अगर आपकी 50 साल की उम्र हो गई, और मेरी 50 साल की अभी उम्र, अभी 52 साल का हूँ मैं, 50 साल की उम्र अभी हो गई, वो बोलते हैं कि हर डे को एक ट्रीट इट एज अ लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, और मज़े करो लाइफ में, क्योंकि आपको पता नहीं और कितने आपकी लाइफ में डेज रहे हैं. इसलिए चिंता मत करो, बजट कुछ आएगा कुछ जाएगा, लाइफ विल गो ऑन. तो मैं उसी लिए इतना कभी डीप थॉट नहीं देता कि कितने सेविंग्स है. सेविंग्स हालांकि Xavier ji, you will be happy to know that India is one of the highest savings rates in that sense. That is not because of the government, that is because of the tendency of all of us Indians here who want to save for a better future. अमेरिका वगैरह में आप देखोगे तो लोग अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो 12 रुपये का खर्चा करते बाय वे ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल अदर्स. बट इंडिया में स्मॉल सेविंग्स आर ऑलवेज समथिंग दैट इज द पीपल का कल्चर है यहाँ, और इसीलिए वो स्मॉल सेविंग्स फेवर करते हैं. बजट पे और क्या बोलूँ मैं, आजकल हर एक आदमी का बजट पे एक राय होता है. मेरा काम है सिर्फ आपको एनालाइज करके बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या है. परसों मैं अहमदाबाद में था और वहाँ अहमदाबाद के जो स्पीकर इकोनॉमिक सर्वे पे बता रहे थे, वो बोल रहे थे कि आजकल मुझे मेरा बार्बर जो सलून चलाता है वो भी मुझे व्हाट्सएप भेज रहा है बजट के ऊपर. मैंने कहा भाई मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है. मेरा शायद बार्बर सलून वाला बोलता है कि इसका तो पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नहीं है लगता है, बाल इसके ऑलरेडी जा रहे हैं, और मैं डाई कराने को कभी ना बोलता हूँ उसको, नहीं प्लीज़ डाई मत करिए, जैसा है वैसा ठीक है. इसलिए वो मुझे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नहीं दिखता है मेरे में, इसीलिए मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ने उसमें इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला व्हाट्सएप ग्रुप का. बट एक चीज़ है कि जैसे जेवियर जी ने कहा, एक चीज़ में मैं मानता हूँ, और जैसे क्योंकि यहाँ कहा गया है कि बाइलिंगुअल होना चाहिए, तो और जैसे मैंने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर भी बाइलिंगुअल हो गए, और बहुत सारे हमेशा शुरू करते हर साल एक डायलॉग के साथ, और यहाँ कभी किसी को कोट करते पोएट को. मैं भी अपना एक मूवी का डायलॉग हमेशा मुझे अच्छा लगता है, जब लोग कहते हैं कि क्यों थैंक यू फॉर कमिंग, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ जो मैं मुकद्दर का सिकंदर के फिल्म के डायलॉग से हमेशा कोट करता हूँ कि अगर कोई भाई अपने दूसरे भाई के लिए कुछ करता है तो कोई एहसान नहीं करता, अपना फ़र्ज़ निभाता है. तो अगर हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं तो हम अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं करते. और जैसे मैंने कहा है, वैसे भी घर वाले तो सुनने को तैयार नहीं है, आप लोग मुझे सुनने का एक बड़ा मौका देते हो और बात करने का बड़ा मौका देते हो. विद दैट लेट मी गो इनटू द प्रपोजल्स ऑफ द बजट. राइट, इसके पहले कि अपने देखें कि बजट के प्रपोजल्स क्या है, ये जानना जरूरी है कि बैकग्राउंड क्या था बजट के टाइम पे. एक चीज़ है कि दो चीज़ों की वजह से लास्ट ईयर अपना ग्रोथ ज़रा कम रहा, एक डिमोनेटाइजेशन और दूसरा जीएसटी. और ये तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं मेरे से. और क्योंकि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से थोड़ा ग्रोथ सडनली थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, और उसके वजह से ग्रोथ वाज अराउंड इन द रीजन ऑफ 6%, 6-6.5% से चल रहा था. अभी एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा ग्रोथ होगा, 7-7.5% तक ग्रोथ जाएगा, 8% तक भी टारगेट कर सकते हैं. और अगर आप इकोनॉमिक सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर को सुनेंगे तो उसके लिए दो कारण हैं ये ग्रोथ के पोटेंशियल के लिए. एक, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी अभी ऐसा लग रहा है कि वहाँ ग्रोथ होगा यूएस में, और अगेन
वो मेरा जो मोटो है कि लाइफ में ज़्यादा सीरियस मत लो किसी चीज़ को, और किसी आदमी को भी सीरियस मत लो। हमेशा तकदीर का ये खेल है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एज दे कॉल इट। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी है जिसको लोग गधा मानते थे, ऐसे आदमी के नीचे भी अभी अमेरिका हाईएस्ट ग्रोथ 3% पे चल रहा है। तो उसके वजह से, यूएस इकोनॉमी के वजह से एक्सपेक्टेशन है कि एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और वो बूस्ट की वजह से इंडिया का ग्रोथ भी, एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ेंगे, और उसके वजह से अपना ग्रोथ भी 6.5 से 7%, 7.5-8% तक भी जा सकता है। ये इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान है। उसके अलावा इंडियन रुपी स्टेबल रहा है। एक्सपोर्टर्स के लिए ये लोग हमेशा चाहेंगे कि रुपी थोड़ा थोड़ा डिप्रिसिएट होता रहे, क्योंकि नहीं तो एक्सपोर्टर्स को बहुत मार पड़ता है। इसके लिए वो लोग जरूर ऐसा कुछ करेंगे कि एक्सपोर्टर और रुपी 63 से 66 के रेंज में रहे। कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? एक्सपोर्ट्स का इसलिए इस बार ज़्यादा थ्रस्ट रहेगा, देखना पड़ेगा एक्सपोर्टर्स के लिए क्या करते हैं। एफआईआई के फंड इनफ्लोज तो काफ़ी आ ही रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा कि ये 10% टैक्स की वजह से एफआईआई का इनफ्लोज कितने इम्पैक्ट होंगे, ये अपने को पता नहीं चलेगा, अभी आगे देखकर पता चलेगा। पर बेसिकली दो चीज़ें बहुत क्लियर थी बजट के पहले कि ये बजट ज़रा पॉपुलिस्ट बजट होने ही वाला था। एक बार गुजरात इलेक्शंस में गवर्नमेंट में इतना बड़ा झटका खाया, और जो उनका बहुत फॉर्मिडेबल जो स्टेट माना जाता था उसमें अगर उनको डिफ़िकल्टी पड़ी, और राजस्थान का तो लकीली इलेक्शन के दिन पे रिजल्ट्स आए, वरना और भी पॉपुलिस्ट होता बजट, मेरा अनुमान है। इसीलिए इट वाज वेरी क्लियर कि वो ज़्यादा रिलीफ तो देने नहीं वाले हैं। सेकेंडली, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के हिसाब से उन्होंने किया है, जो है जिसको अभी मीडिया डब कर रही है मोदी केयर, यानी 10 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, और 50 करोड़ लोग टोटली इस इंश्योरेंस कवर में कवर्ड होंगे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा, और हमेशा इंग्लिश में कहावत है, रॉब पीटर टू पे पॉल, यानी आप और मेरे से ही वो लोग वो 1% सेस लेके ये मोदी केयर और बाकी सब करने वाले हैं, और कहीं से तो पैसा आने नहीं वाला है। तो उन्होंने वही किया है, 3% से 4% सेस किया, और उसको अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को डेजिग्नेट किया है, और ये उसी जब को जाके फंडिंग करेगा। इवन इफ 2500 रुपया अगर लगता है इंश्योरेंस कवर के लिए, और जो कि लोग मानते हैं छोटा अमाउंट है, इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उन्होंने बजट में प्रोविज़न नहीं किया है। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कलेक्शंस ऑफ जीएसटी, एंड जयेश गोगरी साहब जो बात में आपने को बताएंगे कि एक्चुअली कितना ये ऑप्टिमिस्टिक है कि इतना कलेक्शंस होना, पर उस कलेक्शंस की वजह से वो भी बहुत उन्होंने फैक्टर किया है फॉर ऑल दीज पॉपुलिस्ट मूव्स लाइक द फार्मर्स प्रोक्योरमेंट प्राइस एज वेल एज द मोदी केयर रिफॉर्म विच इज़ देयर। अगर वो मोदी केयर रिफॉर्म को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पे 1% सेस इफ अ लॉट ऑफ माई पीपल are at least getting a net cover of 50 rupees. Last week only we heard, हमने सुनाई पड़ा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो गुजरात में थे, जिनके पिताजी एक रिक्शा चालक थे, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट 23 ईयर्स ओल्ड में बेचारा एक्सपायर हो गया आफ्टर जस्ट क्लियरिंग द एग्जाम्स। इतना प्रेशर है सीएस के ऊपर। और जस्ट इमेजिन एक माँ बाप जिसने एक आदमी को, लड़के को बड़ा किया, कितनी आशाएं थी, और उनके पास अभी कोई नेट नहीं रहेगा। तो ऐसे अगर लोगों को 5 लाख का अगर इंश्योरेंस नेट मिलता है तो मेरा मानना है वो अच्छा, इतना तो हम जरूर कुछ कर ही सकते हैं अपने लोगों के लिए। नाउ लेट मी मूव ऑन टू डायरेक्ट टैक्सेशन एंड प्रपोजल्स ऑन द डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे मैंने कहा, एजुकेशन सेस जो 3% था उसको अभी बढ़ा के हेल्थ 1% और बढ़ा दिया, 4% हो जाएगा, एंड इट विल बी कॉल्ड द हेल्थ एंड द एजुकेशन सेस। टैक्स रेट और सरचार्ज में कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, न तो टैक्स स्लैब्स और इंडिविजुअल्स में कोई चेंज है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया बहुत सारे नए टैक्स पेयर्स अभी आए हैं, और वो लोग डीमोनेटाइजेशन को ये श्रेय दे रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के वजह से काफ़ी लोग अभी नए टैक्स पेयर्स आए हैं,
और टैक्स बेस बढ़ते रहेगा, पर हमारा अगर जीडीपी टू टैक्स पेयर्स का आप रेशियो देखेंगे कोई भी कंट्री के हिसाब से तो बहुत ही कम है, और इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी इसके ऊपर ज़्यादा आपको रिलीफ नहीं दे सकती। पर क्योंकि वो 1% सेस बढ़ गया है, इसीलिए जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स कहा जाता है दैट इज बीइंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 35.5% लास्ट ईयर, वो बढ़ के अभी 35.88% हो जाएगा। सैलरीड एम्प्लॉयज़ का हमेशा ये रहा है, रिक्वेस्ट रहा है कि हमारे को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करता था 25,000 रुपये का, वो हमको वापस आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी स्टेटिस्टिक्स दिखाए कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ कितना टैक्स भरते हैं और कितना प्रोफेशनल नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़ भरते हैं। और सैलरीड एम्प्लॉयज़ स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से करीब 50,000 रुपया टैक्स ज़्यादा भरते हैं एट एन एवरेज, जो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच पे कोट किया। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा ऑनेस्ट है, ये है कि उनको बेचारे को कोई ऑप्शन नहीं है, टैक्स डिडक्ट हो जाता है, जबकि प्रोफेशनल्स को ज़रा ऑप्शन है ऑफ क्लेमिंग एक्सपेंसेस, इसीलिए वो अपना टैक्स ऑप्टिमाइजेशन करके प्रॉब्ली शायद टैक्स लो भरते हैं। पर उनके लिए भी कोई सौंप देना बहुत ज़रूरी था। ये क्लास बढ़ता है, हमेशा बढ़ता जा रहा है सैलरी एम्प्लॉयज़ का, इसलिए इस बार 40,000 रुपीज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस दिस टाइम नाउ 40,000 रुपीज़, बट एट द सेम टाइम एक हाथ से दिया और एक हाथ से उन्होंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस हटा दिया, जो कि 1,600 रुपया था, 1600 मल्टीप्लाई बाई 12 19,200 रुपया वहाँ चला जाएगा। और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस जो 15,000 मिलता था आज सैलरी एम्प्लॉय को, वो चला जाएगा। एज अ रिजल्ट आपको हाथ में सिर्फ 5,800 रुपया मिल रहा है। क्लेवरली पॉइंट पुट इट, 40,000 एक तरफ से 5,800, इसलिए सिर्फ नेट इफेक्ट आपको मिलेगा। पर फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि एक चीज़ है कि जो एम्प्लॉयर था जिसको एक्सपेंसेस के सब डिटेल रखने पड़ेंगे, उसका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी फार्मेसी शॉप में जाओगे और 15,000 में जितने सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे वो लोग प्रोटीन पाउडर, शैम्पू, जो आइटम्स थे जो 15,000 में मिलते थे वो उसके बिल लिया करते थे, वो एटलीस्ट वो सब घट जाएगा। फार्मेसी शॉप का धंधा जरा डाउन हो जाएगा, क्योंकि यही जो स्टैंडर्ड डिडक्शन से मिला करता था वो आई थिंक अभी नहीं मिलेगा। सॉरी, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस का मिलता था, वो नहीं मिलेगा। No. I welcome Mrs. Geeta Jain, I believe. Thank you for being here, ma'am. So, standard deduction का जो ये illusion था 40,000 का, वो 40,000 घट के आपको एक्चुअली 5,800 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच में कुछ कहा नहीं गया, एंड दिस इज इन लाइन विथ बोथ। इफ़ यू सी फाइनेंस मिनिस्टर का आप प्रेस रिलीज देखो, आप हसमुख अढ़िया जी का प्रेस रिलीज देखो, तो वो दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं कि अगर आदमी फिक्स डिपॉजिट वगैरह वगैरह पैसे डालता है तो उसको टैक्स भरना पड़ता है स्लैब रेट के हिसाब से, जबकि आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है तो उसको आज टैक्स नहीं था 1 साल के बाद, और वो इन अ वे इज़ नॉट प्रोडक्टिव यूज एज सच। घर बैठे बैठे आदमी पैसा कमा रहा है। दिस इज़ देयर लॉजिक, इट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ देयर लॉजिक, एंड दैट इज़ वाई दे सेड if you see the overall budget में कहीं ना कहीं there are a lot of steps which are anti-market in that sense. In line with that, 54 EC में आज जो आपको कैपिटल गेंस, जो आपको 50 लाख रुपया डिडक्शन मिलता था अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते थे, तो that was available for all capital gains, including capital gains on land and building. Now it will be only limited to capital gains on land and building. Other capital gains you will not be entitled to a deduction under section 54EC. So this is an important amendment. Again, or in order to make the bond investment even a little less attractive, the tenure of the bond का जो tenure है वो अभी 3 साल से 5 साल कर रहने वाले हैं. तो obviously as a result this is a discouragement for people to invest into bonds as such. मेडिकल एक्सपेंस के लिए जैसे मैंने कहा सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अच्छा बजट है. मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं
जो आज आपको 30,000 रुपये मिलते हैं फॉर टेकिंग एन इंश्योरेंस कवर फॉर सीनियर सिटीजन्स और फॉर एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर द वेरी सीनियर सिटीजन्स जो आज अलाउड था वो 50,000 का, वो सारे का सारा एक साथ कंबाइन कर दिया है एंड द मैक्सिमम अमाउंट नाउ अलाउड विल बी 50,000 रुपीज. सिमिलरली फॉर सम क्रिटिकल इलनेसेस देयर वाज अ सेक्शन 80 DDB जिसमें आपको 60,000 और 80,000 रुपये मिलते थे फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर on those senior citizens and very senior citizens. That amount is now proposed to be increased to 1 lakh rupees. एक अच्छा जो अमेंडमेंट है जो वेरी सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आप एज करते हो तो आप चाहते नहीं कि मार्केट वगैरह में पैसे लगाओ, और फिक्स डिपॉजिट्स में काफ़ी लोग लगाते हैं और बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ का मेजर अर्निंग सोर्स फिक्स डिपॉजिट्स हो जाता है. तो जो TTE में जो 10,000 रुपये आपको मिलता था ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट एज वेल एज बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिट्स, अभी उसके लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है 80 TTB, और इसमें सीनियर सिटीजन्स को 50,000 रुपया डिडक्शन मिलेगा फॉर डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द पोस्ट ऑफिस. सो दिस इज अ वेलकम डिडक्शन, वेलकम चेंज फॉर द सीनियर सिटीजन्स एंड इट विल हेल्प देम to get some relief from tax. और एक पर्सनल टैक्स जो इम्पैक्ट करता है पर्सनल टैक्सेस का, वो है ये नेशनल पेंशन स्कीम का एक जो डिडक्शन है. आज अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डालते हो और जब आप क्लोज करते हो और पैसा विड्रॉ करते हो तो कंप्लीट एग्जेम्पशन नहीं है, अनलाइक PPF एंड अदर स्कीम्स. बट देयर वाज अ 40% एग्जेम्पशन गिवन बाय द लास्ट बजट. पर जब लास्ट बजट में ये इंट्रोड्यूस किया गया तब it was only available for salaried employees and not for professionals and people who are not in employment. This year it is been extended even to people who are professionals and not salaried people. So that is a good extension of the benefit. However, for national pension scheme to become more attractive, people have repeatedly said that make it a completely tax free and then only will it be attractive. और एक छोटा अमेंडमेंट है विच इज़ नॉट वेरी मटीरियल, बट क्या होता था कि अगर एक कोई आदमी है और आप उसको अपने कंपनी से या तो निकालना चाहते हो या उसको स्वीटनर देके परसुएड करना चाहते हो कि भाई अभी आप मार्गदर्शक बन जाओ, अभी कंपनी में मत रहो, तो उसके लिए एक अमाउंट दो कॉम्पेंसेशन का. तो नॉर्मली दैट वाज बीइंग टैक्स्ड एज सैलरी. कहीं ट्राइब्यूनल ने रूलिंग दिया होगा कि this is not salary because he is no longer in employment with the company, but it is a capital receipt. So in order to plug that loophole, they have amended section 56 to say that any amount paid in connection with modification of employment will be now taxable under section 56 as income from other sources. और एक amendment जो है, that is in order to promote, to try and curb the use of cash, is on charitable trusts, and I'm sure there must be many charitable trusts which are doing a lot of good work, and therefore charitable trusts ko specially you will have to be a little careful on this particular provision, because charitable trusts में बहुत सारे qualified accountants नहीं होते और बहुत सारे लोग voluntary काम करते हैं, तो इनके लिए ये बहुत careful रहना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दो provisions इन्होंने introduce किए हैं. एक तो अगर आप देखोगे चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे आप जानते हैं उनका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे होता है. वॉट एवर मनी दे रिसीव बाय वे ऑफ डोनेशन और वॉट एवर इज अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, एंड ओनली वॉट एवर इज नॉट अप्लाइड इज देन टैक्स्ड एज इनकम. तो जो एप्लीकेशन करते हैं आज कोई रिक्वायरमेंट नहीं था कि इट शुड नॉट बी, दे कुड स्पेंड इन कैश एंड दैट कुड बी अलाउड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. नाउ एनी अमाउंट मोर देन 10,000 रुपीज इफ यू स्पेंड इन कैश, then it will be disallowed. Very similar to जैसे corporates में 48(3) होता है, वैसे उसी similarly to that provision charitable trust को भी both section 11 में और section 1023C में careful रहना पड़ेगा that they do not incur expenditure more than 10,000 rupees in cash, otherwise there will be a disallowance. The second disallowance is very similar to what again is applicable for business taxpayers, where today if they incur expenditure without deducting tax at source, then there is a 30% disallowance which applies.
that same disallowance is also sought to be made applicable for charitable trusts, both which are covered by section 11 to section 13 as well as section 1023C. So for charitable trusts, they will have to be extremely careful because, as I said earlier, they don't have people who are sometimes very well versed with the tax law, and two, a lot of people are doing it as a labor of love because they love to do pro bono NGO work, and this is something they have to be very careful about. Then we move on to corporate taxation. Corporate taxation, what was the expectation? The expectation was, I think when the government had first come to power, Shri Arun Jaitley ji had very clearly laid the roadmap, and he had said that I will reduce, he had said that the effective tax rate that corporate India pays today is around 25%. Or kyun? Why? Because a lot of them get benefits by way of a tax holiday, either under section 10 or under section 80IA, 80IB, and so on and so forth. Or under section 35 for scientific research, 32 AC, many other provisions give you a benefit. And he said the effective tax rate is only 25%. So he had announced a roadmap कि 2021 तक मैं सारे deductions withdraw कर दूंगा. There will be no longer any deductions available, और मैं corporate tax rate को 25% कर दूंगा. So in accordance with that roadmap, people were expecting that the corporate tax rate will come down to 25% for all companies. However, as he said, he has not made it applicable for all companies, but he has made it for companies applicable to the 25% rate for all companies who have a turnover less than 250 crores during financial year 2016-17. So you'll have to look at 2016-17. See, अगर आपका 250 करोड़ से कम है turnover, so you will be eligible for the lower rate of 25%. Statistics show that 1% really, Finance Minister made a statement that this will cover about 99% of the total companies. But if you look at India, corporate India, the 1% really contributes to the most major chunk of the corporate tax revenues, and therefore they will not really get the benefit of the 25% tax. And if, God forbid, by 2021, you remove all the deductions and you still have a high rate of about 35%, then they will be hit from both sides, and their effective rate may go up much beyond 35%, because as you know, in tax, you have a lot of artificial disallowances like non-deduction of tax at source and many other things which hit you, and your effective tax rate may go much higher. Hopefully by 2021, all these companies will also get a 25% rate of tax. और कोई चेंज नहीं है, ना LLP पे चेंज, ना डोमेस्टिक फर्म्स पे कोई चेंज है, ना इंडिविजुअल LLP पे चेंज है. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो आज एप्लीकेबल है उसका थोड़ा चेंज होगा, 20.56%, largely because of the cess which we spoke, which has gone from 3 to 4%. ये एक टेबल है, आपके वसई ब्रांच के मोबाइल ऐप में ये अवेलेबल मिल जाएगा आपको, तो आपको बहुत डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें एक ही चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो ये ऑफ कोर्स मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का रेट है. आप जैसे जानते हैं कि आज अगर कंपनी, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट हियर, कि अगर आपका इनकम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से कम है तो आपको टैक्स मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के हिसाब से लगता है, और वो रेट भी थोड़ा बढ़ जाएगा इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द सेस. सो कॉर्पोरेट टैक्स में अभी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे आपने देखा है कि अगर इसमें एक टेबल जो दिखाता है कि अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है और वो डोमेस्टिक कंपनी का 250 करोड़ से अगर इनकम कम है, टर्नओवर कम है, तो जो 34.61% टैक्स रेट पे करती थी आज तक, उसका टैक्स रेट घट के 29.12% होएगा, क्योंकि 25% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, effective tax rate will be 29.12%. On the other hand, the other domestic companies more than 250 crores of rupees, their effective tax rate will actually go up from 34.61% to 34.94%, making it little more costly for them and not cheering them by this particular budget.
ये एक चार्ट मैंने इसलिए यहाँ रखा है बिकॉज इट हेल्प्स यू समटाइम्स व्हेन अ लॉट ऑफ योर क्लाइंट्स कम टू यू एंड आस्क यू कि मुझे अगर एलएलपी आज फॉर्म करना चाहिए कि मुझे कंपनी फॉर्म करना चाहिए, क्या करूँ एग्जैक्टली मैं। तो आप जैसे देखोगे इफेक्टिव टैक्स रेट आज क्या पड़ता है, और प्रमोटर के हमेशा उसके नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एक कॉर्पोरेट टैक्स रेट होता है और उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगता है जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो आपके हाथ में क्या आता है, तो अगर कंपनी है और उसका 250 करोड़ रुपया अगर टर्नओवर नहीं होगा तो उसका देखेंगे आप तो इफेक्टिव टैक्स रेट 40% तक जाता है, क्योंकि एक तो आपका जो टैक्स रेट है और उसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और आखिर प्रमोटर या पार्टनर के हाथ में सिर्फ 58.79% रहता है। जो कंपनी 250 करोड़ से ज़्यादा जिसका टर्नओवर है उसका इफेक्टिव रेट तो 46% है और उसके प्रमोटर के हाथ में सिर्फ 53 रुपीज़ रहता है। तो इन अ वे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज नथिंग बट लाइक एन एडिशनल कॉर्पोरेट टैक्स. So even if they were to bring down the rates, if you see what is effectively left with the promoter, it is very little really. And अगर आप LLP, इसलिए आज भी LLP is very useful because LLP will give you a much higher left amount in the hands of the promoter or the partner concerned. 65 rupees, as we have seen here, gets left over to the promoter or the partner, and therefore the LLP is still a good form of doing business. The only good thing is that as opposed to a small company with less than 255 crores, MSME as the finance minister calls it, for those people, they at least will have, because of the reduction of taxes, the net amount which will be left with the promoter will go up from a 53 rupees to a 58.79 rupees. That is the major impact of this corporate tax rate cut. Then again, a lot of you, again, this is meant for chartered accountants, is the impact of ICDS. As you know, ICDS was to come with effect for 2017-18 assessment year, and उसमें गवर्नमेंट के दो ही इंटेंशन थे. गवर्नमेंट चाहती थी कि I will tax you at the earliest possible opportunity, and if there is a claim that you are making, I will postpone it till the latest opportunity. That is all that ICDS seeks to do, nothing else. They say that it is in order to clarify certainty and bring certainty. There is no such certainty. And it is the worst thing for doing business in India. It may be good for chartered accountants, but chartered accountants also are not able to realize better fees, because a lot of your clients say that this is anyway a part of the tax audit report. So you're not giving us fees for that, and at the same time it is horrible for doing business because you have to look at 10 different ICDS in order to compute the income as such. This was challenged, the entire ICDS 1 to 10 was challenged by the Chamber of Tax Consultants in the Delhi High Court, and the Delhi High Court there were told that look, what the government is trying to do is, by way of circular, they have said that any other judicial ruling in the past will be overturned because of ICDS. And how can they say that? It was a very clever move by Chamber of Tax Consultants, because if you always appeal to a judge and say, my lord, how can the bureaucracy overturn what the judiciary is doing, the judiciary will always be sympathetic. As you know, how judiciary is also becoming active with press conferences now being arranged. So this was a very clever move where they went to them and said, my lord, they are trying to say that what you have said is nonsense. What we are saying is now better, and therefore the Delhi High Court struck down the ICDS 1 to 10, and by saying that the judicial rulings will prevail and not what is mentioned in the ICDS. So the government had one option. We from the Direct Taxes Committee had represented that this is not good for business in India. You are saying that from 140 points, you have come into the top 100 now for ease of doing business. But look at the waste of time because of ICDS. And the chartered accountant community is not really getting anything from it. And why don't you drop ICDS altogether? So we had not heard, government had not come back to us, and we thought that are they appealing to the Supreme Court or not? कि लोग चुप क्यों हैं? और अब पता चला कि चुप क्यों हैं, क्योंकि वो लोग ने लॉ ही पूरा अमेंड कर दिया. So in order to get over the judgment of the Delhi High Court, they have amended the law
and whatever was there in ICDS 1 to 10, they have brought that into the law by amending different sections and trying to ensure that income is taxed at the earliest. If it is export incentive, if it is a grant, if it is anything which is to be received by you, then virtual certainty is not required as long as you have reasonable certainty it is taxed in the first place. But when it comes to us, if you have a mark-to-market loss, which you are claiming in relation to a derivative of foreign exchange loss, that will not be allowed on an accrual basis. It will be allowed only when actually realized. That is the major amendments which have been brought by ICDS. There are several amendments made in order to cover the impact of the ICDS and the Delhi High Court, which I will not take you through in great detail because this is a public meeting. You can look at it at your convenience. But effectively, Delhi High Court decision has been overruled. Another important amendment this time which has come in business income, again for chartered accountants, largely to note is that today under the Income Tax Act, when you convert something from a capital asset to stock in trade, then it is taxable under section 45(2). And that amount is finally taxed when you sell the asset. When you sell whatever is the asset which you have converted into stock in trade, and it is divided into two parts. One is taxable as business income, and the balance is taxed as capital gains, but only in the year when you realize the proceeds of the asset concerned. So it is there in the Act. Where people converted from stock in trade to capital asset, there was no such provision to tax it, and there were many tribunal rulings which had held कि ये टैक्स नहीं हो सकता क्योंकि प्रोविजन कोई लॉ में नहीं है, इसीलिए उन्होंने प्रोविजन ला दिया. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स इट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू टू कन्वर्ट stock in trade into a capital asset, because a capital asset regime for taxation, as you know, especially for investments and securities, was much better, where a listed entity, as you know, was exempt and things like that. Therefore, you may want a capital asset and not a stock in trade. Now, if you convert an asset into stock in trade, it will be taxed in that very year itself as business income. It will not be postponed till you actually sell the capital asset. It will be taxed in year one itself, and the balance will be taxable as capital gain as and when you actually sell it. So the fair market value of the asset is immediately brought to tax in the first year itself. This is shown by way of an example in my presentation. 100 rupees is the cost of the stock. The fair market value as on December is 110 rupees, and that is being brought to tax in assessment year 18-19 itself by way of business income of 10 rupees, and the balance amount of 40 rupees, which is the difference between the 110 and the 150 rupees, will be taxable in the year in which you sell it as capital gains tax. So there is going to be tax outflow without any real income being gained by you. And that is what I meant when I said that the effective tax rate sometimes can be much higher than the 34% that you pay on your book profits, because there are several such disallowances under the Income Tax Act which are artificial disallowances and do not capture the real income. Then ये थोड़े अच्छे provisions भी आए हैं, वो है largely relating to the insolvency resolution. आप जानते हैं कि insolvency resolution जो कि अपने chartered accountants के लिए एक नया avenue of practice है, I'm sure बहुत सारे लोग यहाँ IPA professionals भी बने होंगे, and that is a good move on the part of the government, because a lot of our companies which were becoming sick actually had not paid to the governments, to the banks and financial institutions a lot of their dues. And वो पैसा किसका है? आपका और मेरा ही पैसा है जो हम लोग बैंक में डालते हैं. अगर वो कंपनी अगर देती नहीं है बैंक को, तो अपना ही पैसा वहाँ डूब रहा है by way of NPAs, और हिट अपने को ही लगता है. तो गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी गुड now this resolution process by which it goes to the NCLT, and the NCLT then calls the meetings of the creditors, and then an IPA professional takes charge of the matter and then looks at people who will be interested in buying over the company and handing it over to that person. So अगर आप पेपर में पढ़ो तो बिनानी सीमेंट है, उत्तम गाल्वा सीमेंट स्टील है, और एक दो स्टील कंपनीज, वो सब
IPA प्रोसेस में अभी चल रही है, और कुछ कंपनीज हैं जैसे कि जिंदाल स्टील वगैरह, उन्होंने उसके लिए बिड किया है फॉर दोज कंपनीज. सो द होप इज that these companies will be turned around. It will be very good one, because banks will have now a better management to take care of. Hopefully the workers, their provident fund dues, their people who are working with them, they will get a continuity, because if the bank was to close, if the company was to close down, then nobody benefits other than the promoter. In India we always have a situation, sorry for being a little socialist, where no promoter is ever insolvent. It is only the company which is insolvent. Promoters to hamesha they are laughing their way to the bank. So in order to facilitate that, some measures have been taken. Two main such measures are कि जब आपका book profit compute होगा in relation to the company, because of the waiver of the dues by the banks and the financial institutions, ये income right back हो जाएगा P&L account में. और जब जिस साल राइट बैक होगा उस साल अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम टैक्स आके आपका 115 जेबी में प्रॉफिट मांगती आपके बुक प्रॉफिट्स के ऊपर. पर बिकॉज ऑफ द प्रोविजन, एक आज प्रोविजन है कि आपका अनअब्सॉर्ब्ड लॉस और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट दोज बुक प्रॉफिट्स, और आपको बैलेंस पे ही टैक्स भरना पड़ता है. बट समटाइम्स दैट कैन बी द लोअर ऑफ द टू, इट कैन बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट. सो व्हाट दे हैव नाउ प्रोवाइडेड इज that it will be unabsorbed loss and depreciation which will be considered. That will be a much larger amount which will be set off against the book profits. So one thing which will be achieved is that if you have realized some gains, then the gains partly the government will not take away. It will be available to the company which has taken over this insolvent company as such. The second amendment which is also there for the benefit of these companies which are going in insolvency process is कि normally when shareholding changes hands, you have a provision in the section called section 79 of the Income Tax Act, जहाँ अगर आपका 51% shareholding change हो गया तो आपको losses carry forward करने को नहीं मिलते. वो भी इधर provide किया है कि even if there is a change in the shareholding, you will be allowed to carry forward the loss. So it is becomes better for companies which are willing to take over companies, because they are getting the benefit of not paying taxes on the right back, as well as they are allowed the losses to be carried forward. So these are some good provisions which are aimed at trying and getting insolvent companies to become solvent, and I think that is always for the benefit of the economy. The good part is that those of you who have qualified as insolvency professional resolutions will have to certify some of these statements in relation to section 79 and all, and that is obviously an avenue of business for you. एक provision जो आया है on deemed dividend. आज क्या होता है, apart from the dividend that you receive from companies, there is also something which is called deemed dividend when you give loans and advances to a shareholder or a company in which the shareholder is substantially interested. That is called deemed dividend under section 222E of the Income Tax Act. Now what was happening was, जब आदमी देता है लोन शेयरहोल्डर को, तो शेयरहोल्डर के हैंड्स में टैक्स होता था. ये दे असेसिंग ऑफिसर्स को 2-3-4 साल के बाद पता चलता था, जब ये असेसमेंट होता था और उनको पता चलता था कि ये टैक्स हो रहा है, और तब तक वो शेयरहोल्डर के हैंड में टैक्स होता था. एंड द मेमोरेंडम ऑल्सो सीम्स टू सजेस्ट दैट पीपल वर प्लानिंग to give such loans and advances because it was being taxed at a lower rate and not the dividend distribution tax rate. So what they have done is, now if you give a loan or advance and if it is treated as deemed dividend, then the company will now have to deposit the DDT, dividend distribution tax, at the rate of 30% as opposed to the shareholder paying the dividend. This will create a lot of problem for companies, because first of all, what is deemed dividend is itself into a lot of controversy. Intercorporate deposits, there are rulings which are held, is not dividend. Share premium is not part of accumulated profits. If it is a genuine trade or an advance, if it is an advance towards supplies, all these things have been held as not creating a deemed dividend. But now the company will have to take a call and it will have to deposit that 30% immediately, otherwise there will be interest, and then you will also be treated as an assessee in default. So this is a little bit of a retrograde provision, I would say. I don't think there was any major planning being done. This is all in order to shift the emphasis from the tax officer who had to collect the money on the deemed dividend to the company and say,
company, now you deduct tax on the distributed dividend and pay the DDT to the government. The other amendment on DDT is in relation to equity oriented fund. आपको बहुत सारे लोगों ने कन्विंस किया ही होगा पास्ट फ्यू ईयर्स में कि बैलेंस फंड में पैसा डालो, आर्बिट्राज फंड में डालो, इक्विटी ओरिएंटेड में डालो, क्योंकि वहाँ DDT नहीं लगता. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 1 ईयर, जैसे अपने जानते थे कि देयर वाज नील रेट ऑफ टैक्स, and therefore a lot of money was flowing into equity oriented funds. Now they've introduced a 10% dividend distribution tax even for equity oriented funds. So as a result, your ultimate return which you get from the funds will reduce now, and to that extent there is equity, both for equity and for debt. Now DDT will be applicable. Startup India एक अपना गवर्नमेंट का एक अभियान रहा है, जैसे मेड इन इंडिया है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, और यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं. आज आप देखते हैं कि इंडिया ने बहुत तरक्की की है स्टार्टअप्स पे. तो अभी तो ये बड़े हो गए हैं कुछ स्टार्टअप्स, जब स्टार्टअप्स थे लाइक उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सारे के सारे स्टार्टअप्स थे जो कि कंसीव हुए एक आइडिया से. और आइडिया क्या है, जहाँ भी आपको डिस्कम्फर्ट है, जहाँ आदमी को कुछ पेन पॉइंट है, तो एक ऐप के द्वारा वो पेन पॉइंट को आप रिड्यूस करो. आपको प्रॉब्लम हो रहा था, आपको खाना इधर से इधर का, इधर के कचौरी अच्छी है, इधर के जलेबी अच्छी है, कहाँ से क्या करूँ मैं, कौन से रेस्टोरेंट से लाऊं. स्विगी आपको आसान कर देता है, 4 जगह से ला के आपको फूड डिलीवर कर देता है. कहाँ से खाना खाना है, जोमेटो आपको बताता है. टैक्सी और वगैरह का ओला और उबर ने तो अपना लाइफ कितना ईजी कर दिया है. अभी व्हेन आई आस्क्ड, जैसे लोग ने कहा कि कितना स्लैब वैप गया है, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि साधारण जनता की लाइफ कितनी इजी हो गई है. दैट फॉर मी इज़ अ बिग टेक अवे. अगर आप आज ही भाईंडर पे आया हूँ मैं और एस्केलेटर्स वहाँ अच्छे चलने लगे, इंस्टॉल करने लगे, दैट इज़ मच बिगर फॉर मी देन अ लिटिल बिट ऑफ टैक्स हियर एंड देयर, because that is the way public, the middle class is really benefiting. So these startups are now eligible to a tax holiday of 3 years out of 7 years. And the 3 years or 7 years is because the startups are not normally profitable in the first few years. So they have an option to claim the deduction in the later years as well. The condition, of course, is that they should have a revenue of less than 25 crores of rupees, which normally startups may have a low revenue, but they have huge funding from angel investors, VCs, private equity, and things like that. So they were eligible till 2019. Now the time limit for them has been extended to 2021. What was a startup was earlier defined as someone whose business involves innovation, development, and deployment or commercialization of new products or processes which are driven by a technology and intellectual property. So all these startups like Uber and all are driven by some technology. They are driven by, say, obviously by the GPS and all that, but everybody has a new process, a new idea. The government has announced as per the startup policy that other startups which will be entitled to a holiday are those which have a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation. अगर आप कभी ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल को सुनेंगे तो हमेशा वो बोलता है कि मैंने 25-30 हज़ार टैक्सी ड्राइवर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है. तो ये स्टार्टअप्स में पोटेंशियल भी बहुत है टू गेट रिक्शा ड्राइवर्स, पोटेंशियल लॉट ऑफ अदर थिंग्स. प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा ही है कि भाई जो पकौड़ा बेचता है उसका भी अगर हमने दिया तो वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, so eligible business will also now include a scalable business model which has a potential to generate revenue. So this is a welcome thing for those of you or your clients who are interested in a startup. This is a very good welcome change. You will get a tax holiday for 3 years out of 7 years, 100%. And at times you can also advise your clients if he is trying to do some expansion, and if you believe that expansion or the diversification fits in within the startup holiday, you can advise him to take the benefit of this holiday and try and see how he can benefit from them. So not necessarily only existing startups, existing companies can also plan and can get the benefit of the startup as such. और एक provision है for employment generation. There's not much in that, ATJJAA,
which is meant for giving a deduction of 30% for new employees for 3 years. And this is meant to encourage employee generation. Earlier it was limited only to those who are in the apparel, the textile industry. Now it is extended to the footwear and leather industry. The second change which has been made is that there was a requirement that employees should be employed for 240 days. And sometimes in the year 1 you would not qualify, but in year 2 you would be eligible for the 240 days, and therefore it is so provided. You can see from the example that he will be now eligible in year 2 if he qualifies for the 240 days of employment as such. The other change which has been made, which is a welcome change, is in relation to section 50C, 43CA and all that, where, as you know, when you sell a property today, if the property is less than the stamp duty rates or the circle rates, then the stamp duty value is substituted as the consideration for the actual consideration, and that value is adopted. Now, what has been seen, not so much in Bombay, I would say, but in other circle rate, other places, that the stamp duty can sometimes be on the basis of an entire area as such. And you may have some locational disadvantage in a particular place, or it may be on a ground floor, or it may be near a nala or something like that, and the property price may be much lesser sometimes in the circle rate. So they are giving you a concession of 5%. As long as, take for example, if a sale consideration is 100 and the stamp duty value is 105 rupees, then no addition will be made and the consideration will be taken as 100 rupees. If it is more than 105, if it is 120, then obviously the 120 rupees will be taken as the consideration in section 50C, 43CA, which applies to trading in the stock, real estate, and to section 56 when you get a gift which is for inadequate consideration. So in all these cases, 5% has been given. The Mumbai Tribunal has been consistently giving also another 10% as a leeway on an ad hoc basis. So the question to be seen is whether you have to take 10% plus a 5%, that means around a 15% leeway, which goes back to your old 269 UC, where you used to get about 15% between the difference, and only those properties were actually compulsory acquired. In relation to PAN, one important amendment jo aaya hai, which says that a person who is not an individual, other than individual, if you are entering into a financial transaction for 2,50,000 rupees or more, then you will have to apply for a PAN. And not only will the entity have to apply for a PAN, also a director, partner, trustee, author, founder, karta, any person who has a significant interest in that particular entity and who is competent to act on behalf of that entity will also have to apply for a PAN, because they want to link these transactions together. There is an obsession with the Aadhaar and the linkage. This is also in order to try and see to link transactions together. So they will have to apply for a PAN. This will be effective from 2018-19. Will create difficulties. We don't know how the term financial transaction will be defined. It is not defined in the section. In the rule which finally comes, financial transaction will be defined. But you can be sure that they will try and cover a host of transactions will be covered within the definition of financial transaction, which will lead to a PAN number requiring to be applied. In relation to scrutiny assessment, one good amendment is कि जब आपका scrutiny assessment अभी होता था, what was called earlier prima facie assessment, they could make an adjustment on the basis of Form 26AS in 1660A, 1660. And very often, as you know, somebody may not have uploaded correct information and an addition used to be made. The tax authorities used to make you dance from one place to another. They will say, CPC ने किया है, हमको नहीं पता. CPC will say, tax officer को पता है, हमको नहीं पता. And you would be only visiting one office to another office in order to correct something which was incorrectly made an adjustment. That cannot be now made as an adjustment. That can be probably only made an adjustment when an actual 143.3 assessment happens. The other scheme is a scheme for electronic assessments. They already started now sending you notices for various matters through emails. Now they want to take a step forward and try and see how an electronic assessment can happen without the presence of professionals and the taxpayers. I'm sure the taxpayers will welcome this. I'm not sure whether professionals will like this or not, because a lot of our revenues or fees actually comes in as a result of attendance before the tax officers. I'm sure electronic assessment will be also
in a way complicated, and therefore it is not likely to actually take place very fast, but the government is going to specify the procedure, and we will have to see as and when the procedure, what exactly the procedure is, so implies. Prosecution in relation to companies. For companies which had a liability of 3,000 rupees or less, after TDS and advance tax has been paid, were not liable to be prosecuted. So अगर आपका TDS कट गया, advance tax कट गया, और आपने अगर return नहीं file किया होता, तो आपको prosecution नहीं होता अगर the liability is less than 3,000 rupees. Now that is sought to be taken away because they believe that a lot of shell companies are not filing tax returns and therefore they are not coming into the net. Now this is a provision which will create a lot of difficulties because there are many taxpayers who think that चलो मेरा tax तो already काट लिया है, मैंने advance tax तो भर दिया है, मुझे अभी क्या जल्दी है return file करने की, because I have no tax payable as such. So these people will also now face prosecution if they don't file their tax return in time. Another provision is, today under 80IA, 80IC, in many provisions, if you are making a claim for a provision, then you had to file your tax return in time, the claim in time, otherwise you will not get the benefit of the deduction. अभी उन्होंने क्या किया है, 80HH से लेके 80RRB तक सारे प्रोविजंस को एक साथ कह दिया कि अगर आपको क्लेम करना है और अगर आपने टाइम पे क्लेम नहीं किया तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा. So instead of specifying one section after the other in one finance bill after another, they have now said all those provisions. This will of course not apply to 80C. A lot of the barber salon WhatsApp may say कि 80C and all these are all covered. That is not true. It will only apply to deductions after section 80HH to around 80RRB, etc. others. So if there are some people here who are budding authors and were getting a deduction under 80RR, then under 80RR you will have to make a claim before the due date of filing the return in order to get the benefit of the deduction. There is one provision that was introduced last time, which was called 271J, jahan the tax officer could impose a penalty on a professional, either a chartered accountant or a merchant banker, because he had not reported something properly. And that was something that the Direct Taxes Committee had represented significantly, because without any opportunity to us, that penalty could have been levied. Penalty was not very large, 10,000 rupees, but it was involving a stigma of a professional. Now the only saving grace that has been made is that you are allowed to at least appeal against this penalty under section 271J. They have not removed it, but the penalty has been removed. Now let's come to the important provision of capital gains. I think after this, this is the most major amendment in the budget this time. Kya kiya? You were having listed company shares exempt under section 1038 and you had to hold them for a period of 1 year or more. Now what has been done is that under section 1038, after 1st April 2018, there will be no benefit available for listed companies who are selling after 1 year. So till 1st April 2018, till 31st March, you will continue to get the benefit of section 1038. A lot of people got confused by the finance minister's speech where he said something about 31st January, and they thought that after 31st January, everything is now taxable. That is not the case, and that is why probably there is a lot of selling pressure in the market, because people thought already stock market high pe hai, let us sell at the earliest possible opportunity, because otherwise after April we may not get the opportunity and it will be taxed at 10%. However, one good thing which has been done is that you have been given the benefit of grandfathering, as the finance minister calls it. That means आपका जो fair market value 31st January तक जो है वो आपको मिलेगा, और मैंने उदाहरण दिए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे वो 31st January का सेक्शन वर्कआउट करता है. बट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट आफ्टर 1st April, चाहे आप कोई भी सिक्योरिटी, लिस्टेड सिक्योरिटी बेचो और ऑफ मार्केट होगा तो भी you will not be able to claim the cost inflation index. Earlier you could at least claim a 20% on the basis after claiming the cost inflation index,
that will not be available to you. So that is a significant hit to people whose value had appreciated purely because of inflation, because they could take the benefit of the inflation. After the cost plus inflation index, they could pay only 20% on that. That will not be available any longer. So this is an example which I have given. Again, the app will be handy for you. जहाँ दिखाया जा रहा है कि how it will work in the case of other than an individual HUF and in the case of an individual HUF. Basically, it is only one thing, that for an individual and an HUF, you are getting the 250,000 rupees, which is your basic limit, or the amount which is you are not liable to tax. So the way the tax will work is up to 1 lakh of rupees, anyway there will be no capital gains tax payable. Above the 1 lakh of rupees, the capital gains tax of 10% per surcharge plus cess will come in. So on the left hand side in the table, you have a case of a company other than individual or HUF, it can be company, LLP, whatever it is, who is paying 4 lakh is the capital gains, he is getting the 1 lakh of rupees, the basic limit, and he is paying tax on 3 lakh rupees at 10%. On the other hand, in the case of the individual or the HUF, there is a long-term capital gain, but because he has 1,40,000 rupees as a buffer in his basic limit, that is first reduced, and only on the balance amount after deducting the 1,60,000 he has to pay tax of 10%, so that to that extent of the 2,50,000 rupees, the tax does not trigger immediately, it will trigger in after your basic exemption is also taken care of. What is this logic about the 31st January 2018? As the finance minister said, it is grandfathered. What is the meaning of that? If you remember, when the finance minister had first introduced the budget, he said there will be no retrospective taxation at all. So if he was to remove the benefit of the long-term capital gain exemption under 1038, somebody would have told him, I invested in the market on the promise that if I hold it for 1 year, then I will not have to pay any capital gains tax at all. However, that is not happening, and now you are seeking to tax me when I exit. So therefore, in a way, it is retrospective taxation. So what he is assuring people is, till 31st January, whatever be the price of that asset, I will give you that as the cost of acquisition. So the way it has to be worked out is, you have to take whatever is the sale price minus your actual cost of acquisition or the fair market value as on 31st January, whichever is higher, and only the difference will be so taxable, which I am illustrating here in the form of an example. In scenario 1, if you see, actual cost of acquisition is 80, fair market value on January 31st is 120 rupees, consideration that you are receiving in the month of April is 150 rupees. What is the lower of B or C? Cost of acquisition higher of A and D has to be taken, and therefore here 120 rupees is the amount which is you will take, and you will reduce 150 minus 120, your capital gains will be 30 rupees. In scenario 2, 250, fair market value is 220 rupees. Obviously, you will take the higher amount of 220 rupees, and full value of consideration received is 230. 230 minus 250, you will actually get a loss in that particular case. So basically, you have to take the higher of actual cost of acquisition or the fair market value and reduce that from your full value of consideration. It will be good for people who are having losses, because under section 1038, if you had losses, the losses were not allowed to be carried forward. Now losses will be allowed to be carried forward. If your profits, you can pay tax at 10%. There's also a change which is made to the definition of an equity-oriented fund. That is because I think they are going to introduce a fund of funds concept. This is largely a change in definition. I will not take much time over it. In the case of an FII, the government has declared an intention through a tweet yesterday. I believe in indirect taxes, Jayesh Bhai will confirm that in the past they had said that don't believe in tweets, because once a wrong tweet was said in relation to GST, but now this time they have tweeted that FIIs also will get the benefit of the 31st January grandfathering provision, because they believe that a lot of FIIs had sold, because if you look at the provision for the FII, there was no specific mention of the grandfathering provision. And therefore, the FIIs would not have got the benefit of actual cost of acquisition until 31st January.
and would have had a much higher capital gain as such. Therefore, probably there was a lot of selling pressure on FII. I am not an expert in the stock market. I have never invested significant money, so I am not an expert, so I don't know. I read from the papers that the FIIs had sold, probably on the presumption, and because they are such a powerful lot, immediately yesterday, Finance Minister has tweeted that the same provision will be applicable to FIIs also, and they will also get the benefit of the 31st January fair market value as such. There are some transfer of capital assets by non-resident. This is largely to benefit non-residents who want to deal in the gift city, the International Financial Service Center. Doesn't impact much of us, but they are getting an exemption that if you deal in derivatives, bonds, or on GDR, ADR, then that is so exempted. Deemed dividend also, there is a provision by which there was, what was reported was that what people or companies were doing was that a company with very high surplus reserves and surpluses were merging into Dabba companies, and what the Dabba company will then do will issue shares with a very high premium. And what they will then do is they will use that share premium to reduce capital, and if you use share premium to reduce capital, it was not taxable as accumulated profits, because share premium was not accumulated profits, and thereby get over the clause of deemed dividend. It seems that such an thing came in the press in January 18 about one company doing such a thing, and obviously the finance ministry came to know about it, and therefore they immediately amended the law. Moral of the story is, if you want to do some tax planning, never ever go and tell it before any newspaper. Otherwise you can be sure that an amendment will immediately come. And mind you, as you have seen in the paper, when the budget session ceremony starts, they have a halwa ceremony. वो पेपर में दिखाते हैं, हलवा सबको खिलाते हैं, हलवा खाते हैं. ये तो आई थिंक हलवा सेरेमनी के बाद का प्रेस आर्टिकल भी ये लोग ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है. इसलिए कितना सतेज है, कितने सतर्क हैं वो लोग, और उस हिसाब से इन्होंने यह इमीडिएटली अमेंडमेंट कर लिया. मुझे चिट्ठी आई कि 5 मिनट के अंदर आपका लेक्चर समाप्त करो, पर मैंने वो प्लान करके ही पहले से ख़त्म करने का निश्चय कर लिया था. नहीं, आई वाज जस्ट जोकिंग. थैंक यू वेरी मच. अगर मैंने एम्फोसाइज किया है तो ज़रा बाइलिंगुअल बनने की कोशिश में थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मैंने अपना पूरा एफर्ट और प्रयत्न किया है. जैसे मैंने कहा, दिस इज़ ओनली एन एनालिसिस ऑन द प्रोविजंस ऑफ द फाइनेंस बिल. I do not give my views on whether it's good or bad. Everything, I always take things positively. Everything is good only. If you treat it as good, it is always good. Thank you so much.